So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss a very important modern Indian history topic, and that is Rowlatt Act and Jallianwala Bagh Massacre. Now, first of all, let me clarify. So we are having the class, we were having earlier class at 6 p.m. or sometimes at 8 a.m. But now we will continue to have class at 3 p.m. Okay? And the Hindu analysis will happen in the evening at 8 p.m. Okay? So we have changed the plan. That is what you should be knowing about. Okay. Now, so let us begin. Why we are discussing modern Indian history class? Because you will realize it that there are previous year questions from these topics. They are asking questions from modern Indian history, like civil disobedience movement, Dandi March, Jallianwala Bagh. There are PYQs on that. If you see it, you will realize it. Okay. Before beginning this class, I have one question. Today we have seen one news. If you have read today's newspaper, the digital newspaper, that is what I'm saying, that we have seen an Indian winning an international Booker Prize. Can you please name the lady who has won it and her work also? Anyone? That was in the news. That is why I'm asking. Okay. कोई बता सकता है? Yes. I hope you are aware. Yes. Good afternoon, guys. Adrija, Priyanshi. Yes. So I'm sure you must have seen this news in the morning. Banu Mushtaq wins International Booker Prize. Kannada is actually the language which is spoken in the state of Karnataka. For the book called as Heart Lamp. So this is the book. You can see Heart Lamp. Maybe they can ask the name of the translator also. Banu Mushtaq, translator name is Deepa Bhashti. Okay, translated from Kannada in English by Deepa Bhashti. That is what you should be knowing about. So International Booker Prize 2025. This book has won, and this is important. Yes, Rishi Swaroop, you're right. Banu Mushtaq is the right answer. उनका nomination हुआ था, आज जीत गई. So ये important है because why this is important? Because she's an Indian origin woman. Indian woman है ना, Indian citizen है. तो ये बहुत ज्यादा important हो जाता है. ठीक है. So please read in detail about what is International Booker Prize, who is Banu Mushtaq, was Kannada, etc. और पूरा इसके बारे में डिटेल पढ़िएगा. There might be a passage. ठीक है, हो सकता है आपको मॉक में भी पैसेज मिल जाए इससे रिलेटेड. Okay. Yes. Now let us begin with the topic. So I'm discussing this topic today, right? Rowlatt Act and Jallianwala Bagh Massacre. Now you will be thinking, sir, why are you discussing this for CLAT? And the answer is here. So if you see the previous year question, like CLAT 2025, they gave one option. One passage was based on a civil disobedience movement, right? Dandi March, civil disobedience movement, आप देख सकते हो. So these are the things that were mentioned. Round table conference. These all are topics from modern Indian history. Similarly, देखो Salt March वगैरह. We will conduct this class next week about civil disobedience movement, Dandi March, etc. I'll be having a class next week. ठीक है. Then आप 2024 CLAT का देखोगे. They had discussed about Jallianwala Bagh, General Dyer. Jallianwala Bagh Massacre, etc. They have already asked the PYQ. Okay? And that is why it becomes very important that you should know about Jallianwala Bagh. So, एक तो ये हो गया. Then, of course, this is also, you can say, directly or indirectly related with history. Constituent Assembly debates are related. Yeah. So, you should have a basic idea about Constituent Assembly. इस पर मैंने class लिया भी है. I've already taken a class. Just go and search this. You will get to know about Constituent Assembly. Okay? And I'm explaining the reason why I'm taking these classes. Okay. Now, last class, I had taken one class last week where I had taken class on Gandhiji and Gandhiji Satyagraha. So first of all, please subscribe to our channel. Go to the live section. Live section में जाना, नीचे जाना. If you scroll down, you will find this. All about Gandhiji Satyagraha in India, where I have discussed about Gandhiji coming back from South Africa. And organizing Satyagraha in India. Okay. So I will be asking some 1 or 2 questions initially from this video also. Please answer me. Okay. So here is the first question. Gandhiji came back from South Africa in the year when? Please tell me. This I taught here. Okay. So ये पूछूंगा 2-3 questions. उसके बाद I will start with Rowlatt Satyagraha and all. Gandhiji came back from South Africa in the year. Everyone should be answering. 9th January 1915, exact date मैंने बता दिया. In the year 1915, है ना? Yes, and 9th January is non-resident Indian Day, NRI Day, or what we call it as प्रवासीय भारतीय दिवस, है ना?
is being celebrated. This year, Pravasi Bharatiya Divas was celebrated in Odisha, Bhubaneswar, where the Prime Minister of Trinidad and Tobago was invited. Yes, Priyanshi, Harsh. Many people have answered. Adrija, you all right. Krishi Satdeva. And so Gandhiji came back from South Africa in 1915. I had discussed in detail in that class. इस क्लास में मैंने पूरा डिटेल बताया है. Please go and watch it. Then Gandhiji's first satyagraha in India कहाँ हुआ था? Where it happened? In 1917. Gandhiji's first satyagraha also we had discussed. Where it happened? Yes, Champaran, Bihar. Very good. Champaran, Bihar. That is what you should know. Yes, very good, very good. So basically we had discussed it. And here is the state of Bihar. This is Champaran, where Gandhiji organized a satyagraha. And that satyagraha was against Teen Kathiya system. That is what you should know. Then Ahmedabad in 1918 and Kheda in 1980. Very good, Krishi Satdeva. Right. Now let's start with today's class, which was the first All India Satyagraha of Gandhiji. This is also asked in many exams. Because जो इससे पहले सत्याग्रह थे चंपारण, अहमदाबाद, खेदा, they all were limited to a particular city, है ना? First All India Satyagraha of Gandhiji. अच्छा पता है 12th boards में भी ये सब क्वेश्चन आता है. अगर आप 12th boards दे रहे होगे, है ना? So they ask questions. First All India Satyagraha of Gandhiji. Where it happened? Yes. Where it was Rowlatt Satyagraha. Yes, B is the right answer. And that is why ये भी मैंने last class में थोड़ा सा hint दिया था. And that is why I'm telling you that we'll be discussing this today. All India Satyagraha means almost pan-India tha ye. It was not limited to one city or one state. Rather, this was the protest that was organized almost in entire India. B is the right answer to this question. So this was against Rowlatt Act. So now, please tell me, the Rowlatt Act was passed in the year which? 1917, 1919, 1921, 1923. What is the right answer to this question? Please tell me. Yes, the right answer is 1919. B is the right answer to this question. Kafi famous hai. Yes, Krishi Sasdeva, Srishti, Harsh, Priyanshi, Ananya. You are right. Atrija. B is the right answer. Now, it was passed somewhere around in March 1919, right? And after that, strong protests started happening in entire India. So you have to tell me the reason why it was opposed by the Indians. Uski kya wajah thi? Two-year detention without any trial. Yes, Ananya Singh, very good. And they are asking questions from modern Indian history. That is why we are going in detail. Prosecuted India without trial. No arrest was needed because it was misused as preventive detention. Okay. The best answer has been given by Ananya Singh. Aise aap log bhi sahi ho. Yes, Rishti. Arrest without trial. So basically, the idea was the police can arrest anyone without trial for 2 years. Now, what is the problem with this? This violates a very famous principle. Violates principle of dash. Please tell me what is this. कौन सा principle कोई violate कर रहा है? बहुत famous principle है that is getting violated here, है ना? It means you are arresting someone not producing in front of the court and keeping it in the lockup or jail for 2 years. Right, to be innocent until proven guilty. Yes, very good. Innocent until proven guilty is presumption of innocence, right? And actually, the main principle is principle of natural justice is what we call it as. Na? Presumption of innocence is also fine. Principle of natural justice. And there are two very prominent principle of natural justice. Ko bata sakta hai? Anyone? I am discussing it. There is a reason why I am going in detail. Okay. Because you as a law aspirant should know this. The idea of principle of natural justice, there are two very famous principles which was violated in Rowlatt Act, and that is why it was vehemently opposed. It was called as Black Act because it gave police full power.
Yes, here the other side. Very good, Ananya. One you have answered. Okay, so let me first tell you. Let me discuss about this. है ना? The principle of natural justice का एक बहुत फेमस प्रिंसिपल है ऑडी अल्टरम पार्टम. ऑडी का मतलब होता है लिसन. ऑडियो आपने वर्ड सुना है? ऑडियो, ऑडियो और वीडियो. ऑडियो मतलब क्या था? जिससे हियर करने वाली बात है ना. So listen to the other side before passing a judgment. ऑडी अल्टरम पार्टम, राइट? पहला वाला आपने, ये दो बहुत फेमस है एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. फर्स्ट इज लिसन टू द अदर साइड. होता क्या है? Why we are discussing it, and this is the very reason I'm sure you must have heard it. There is something called as media trial, and this has been criticized a lot. Why? Because this violates this. मान लीजिए let's say a person has been found guilty or has been arrested in a particular case. मान लीजिए वो X है, he has been arrested in a particular case, and the matter is still pending in the court. But sometimes media passes the judgment. अभी उस अदालत में प्रूफ भी नहीं हुआ है, पहली मीडिया ने पास करी जजमेंट कि क्रिमिनल है एटसेट्रा व्हाटएवर इट इज. सो मीडिया ट्राई ethical journalism bad because of this. The first is, now you are seeing only one side and passing a judgment. Let's wait. That is why the court जो होता है वो दोनों तरफ की बात सुनता है. It allows even a hardened criminal to hire the lawyer, right? India में article, which article gives you the idea about having a lawyer, right to have a lawyer? Please tell me. The idea is to ensure principle of natural justice. कि अगर कोई बहुत बड़ा भी क्राइम किया है, उसके ऊपर बहुत ह्यूज एलिगेशन है, तो भी वो हायर लॉयर करे और अपनी बात रख सके कोर्ट में. That is the idea. The second one is nemo judax in causa sua. No one shall be a judge in his own case. है ना, कहा जाता है ना कि आप अपने मैटर में जज नहीं बन सकते हो. Especially this is used, for example, if you are a judge and the one who is actually you are a judge और आपके सामने एक केस आया है जिसमें आपके रिलेटिव का मामला. So then you cannot be a judge, है ना? No one shall be a judge in your own case. Yes, Article 22. Yes, Ananya Singh, very good. So I was talking about this. ठीक है, good. अब देखो एक और प्रिंसिपल है, वो भी नेचुरल जस्टिस का ही पार्ट समझ आता है. प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंस. Someone had written also in the comment, है ना? A person is assumed to be innocent until proven guilty in a court of law. Please be careful. यही मेन चीज. यानी बाय डिफॉल्ट एक आदमी को इनोसेंट माना जाएगा जब तक अदालत में प्रूफ नहीं हो जाए. ठीक है. Again, this is against the idea of media trial. I hope you understand. So there's an entire process that happens because there is a chance that maybe the person, the accused, is actually not the one who has committed a crime. इसलिए जो ethical journalism होता है, अगर आपने देखा होगा, so whenever you read newspaper, ऐसे लिखा आएगा, alleged crime, alleged murderer. तो ये जो लिखा था, ये ethical journalism की साइन होता है. A person has been arrested on the charges of murder or he has been alleged for a murder crime, है ना? अगर ये alleged हटा दिया जा रहा है, it means the journalist who is writing he is passing a judgment against the person. But in reality, it is only the job of the court to pass a judgment. इसीलिए पूरा entire setup होता है. That is the very idea behind the concept of the entire judiciary is there and all that concept, है ना? So इसीलिए so ये सारी चीज को रॉलेट एक्ट वायलेट कर रहा था, and that is why people protested. अच्छा तब तो अच्छा इससे होता क्या है? If this will be there, then it will become a what? A sort of a police state, है ना, और dictatorial state, है ना, कि पुलिस किसी को भी अरेस्ट कर ले और कोर्ट का मामला ही नहीं हो. So that is what was happening in Rowlatt Act, and that is why it was extremely vehemently opposed by the Indians, है ना. ये अच्छा इसलिए ब्रिटिश ला रहे थे रूल, because they believe कि अच्छा ये रूल ले आएंगे तो हम किसी को पकड़ के अंदर डाल देंगे, जरा सा भी शक होगा तो. So that is why it was vehemently opposed. And yes, इसमें अगर आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो. Rowlatt Act, it says, and it was passed by Imperial Legislative Council, है ना, on 18th March 1919. And yes, you can be arrested and on something similar to Defense of India Act and all. ठीक है. So Defense of India Act वगैरह भी यही सब टाइप की चीज. Judicial review भी नहीं है, without trial you can be arrested and all. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 to 18, they had brought Defense of India Act which was something similar to that. वो बोले थे कि वॉर का टाइम है तो इसीलिए we can arrest anyone if we are fearing anything. Okay, then once the war was over 1918 में war over हो गया, still they brought something similar to that. ठीक है. That is what you should be knowing about, है ना. अगर इसमें चाहो तो आप पढ़ सकते हो. गांधी जी called upon people and the British colonial passed the Rowlatt Act and gave power to arrest anyone without any reason, है ना, or without trial, है ना. गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया
है ना. So these are the things in detail about, है ना, this. और एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम था सिडनी, that committee was headed by Sidney Rowlatt. This committee recommended something Rowlatt Act. ठीक है, this act needs to be passed to curb the anti-British activities or nationalist activities and all. ठीक है. Okay. Now, here is the next question. Which article of the Indian Constitution talks about protection against arrest and detention in certain cases? Yes, Krishna Sachdeva, you are right. We are coming to that point. जो आप लिखे हो आपने. Yes. तो ये the right answer is option B, Article 22, है ना. और इसमें पूरा लिखा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन सर्टेन केस. मतलब इसमें पूरा डिटेल बता हुआ है कि ना कि the person has to be produced in the nearest judicial magistrate court within 24 hours if he has been arrested, है ना. These are the things, and no person is arrested shall be detained in custody without being informed, है ना. तो उनको इन्फॉर्म किया जाएगा. अच्छा, इसको एक्सपैंड किया था. It has been explained by the Supreme Court in a very famous judgment. कौन सा जजमेंट है? Where the Supreme Court has explained that what are the procedures that needs to be followed by the police officer while arresting someone. उसको और डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था. Which judgment is that? तो हम लोग हिस्ट्री को कॉन्स्टिट्यूशन से मिला के पढ़ रहे हैं ना, जजमेंट्स एंड ऑल. वेरी फेमस जजमेंट. उसमें और बहुत डिटेल में बताया था कि अगर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट होंगे तो पुलिस ऑफिसर के पास नॉट मनेका गांधी केस, नॉट ना, उनका बैज होना चाहिए, ड्रेस होना चाहिए, पुलिस ड्रेस में होना चाहिए, मेमो जनरेट होना चाहिए, इन्फॉर्म. हाँ, डीके बासु जजमेंट, वेरी फेमस, very famous case. Okay, yes, Ananya Singh, right. हाँ, तो इसमें the Supreme Court had explained in detail कि सनसेट के बाद नहीं अरेस्ट. हालांकि ये तो और भी जगह लॉस है, बट उसको और एक्सप्लेन किया था डीके बासु केस में, because before that there used to have a lot of custodial torture. मतलब पुलिस अरेस्ट कर लेती थी, बहुत मारती थी एटसेट्रा. तो इसलिए उसके बाद बहुत सारे रूल्स बनाए गए कि कब मेडिकल चेकअप भी किया सकता है एटसेट्रा. दीस आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग, है ना. उसके बाद डिटेल है ना. That is what you should be knowing about this. Now, similarly, Article 21 से भी actually right to provide lawyer जो यहाँ से भी flow होता है ना. We had discussed about this in this class कि हुसैन आरा खातून केस में, है ना, right to have lawyer etc. and all. So these also I had discussed in Article 21 in this class. So go and watch that. Now, let's move further. We are talking about Rowlatt Act. तो Rowlatt Act में मैंने बताया कि it was called as Black Act, है ना. फिर जब पास हुआ मार्च में, so अप्रैल में lot of protest happened, है ना. गांधी जी became extremely critical. मदन मोहन मालवीय, मजहरुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना and many other people resigned from Imperial Legislative Council. ठीक है. So they resigned in protest. हड़ताल took place on 6th April. It was declared as Black Act, etc. Yes. हाँ, नालसा केस भी related है, right. So Imperial Legislative Council क्या होता है, कोई बता सकता है? What is Imperial Legislative Council? ये वाला. Anyone? So this Rowlatt Act was not passed by British Parliament. It was passed in India by Imperial Legislative Council. ये क्या होता है? What is that? It is equivalent to what today? आज क्या चीज की equivalent है ये? तो अखबार की कटिंग, Imperial Legislative Council, Black Bill number 1 passed. देखिए, The Honorable Mr. Sharma resigns. अच्छा, कोई इंडियन होंगे, उन्होंने रिजाइन कर दिया. Solemn mockery of the debate, है ना. So एक न्यूज़पेपर की कटिंग है ये. Yes, Imperial Legislative Council is later on became Indian Parliament. Yes, British Indian Parliament कह सकते हो. Yes, actually good, right. हाँ, good. तो actually क्या था? जैसे currently the Parliament has 2 houses. The Indian Parliament has 2 houses. One is called as Lok Sabha. इसको House of People कहते हैं, ठीक है. ओके, उसको उस टाइम पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कह देते हैं, ठीक है. सो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, लोअर हाउस लिखा, ये लोकसभा है आज का. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है. और ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है वो आज का राज्यसभा है. सो इवन टुडे आल्सो राज्यसभा इज कॉल्ड एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है. ओके, यस कृषि सचदेवा, वी आर कमिंग टू दैट पॉइंट जो आप पूछ रहे हो. हाँ, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है
पार्लियामेंट है आज का, टुडे इट्स अ पार्लियामेंट. So Imperial Legislative Council at that time comprises of Council of State, which was an upper house, and Central Legislative Assembly, called as what we call it as lower house. So modern day Central Legislative Assembly is Lok Sabha at the central level. Central Legislative Assembly state से नहीं confuse कर रहा, देखो Central Legislative Assembly लिखा है, it means Lok Sabha, and Council of State is today Raj Sabha, and Imperial Legislative Council is actually today Parliament. Is it clear? Is it clear? I hope you got it. इसी ने Imperial Legislative Council passed this law, ठीक है? And this was extremely opposed, है ना? हाँ, वहां पे प्रेसिडेंट की जगह वॉइसरॉय आते थे जो अप्रूव करते थे, वीटो वगैरह लगाते थे, राइट प्रियांशी? हाँ, वॉइसरॉय वाज देयर, ठीक है? यस, ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. तो इसमें लिखा भी, इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी ना आफ्टर अराइवल. सो फर्स्ट ऑल इंडिया सत्याग्रह ये था, है ना, बिकॉज द प्रोटेस्ट हैपेंड इन द एंटायर इंडिया, है ना. देखो मुंबई सिटी में भी हुआ एंड डिफरेंट प्लेसेस, है ना. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. अगर आप चाहोगे तो यू विल गेट टू नो दैट इस लॉ को ओरिजिनली रॉलेट एक्ट नहीं कहते, ओरिजिनली इसका नाम ये था अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919. दिस वाज द नेम ऑफ द लॉ, ठीक है. इसको फेमसली रॉलेट एक्ट कहते हैं because the committee that recommended this law that needs to be passed was headed by Sidney Rowlatt. इसीलिए इसको रॉलेट एक्ट भी कहते हैं, बट ओरिजिनली इसका नाम था अनार्किकल रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919. दैट इज व्हाट यू शुड नो. दूसरी बात ये कि जो कमेटी बनाई गई थी, जो उसके हेड थे सिडनी रॉलेट, उस कमेटी का नाम था सेडिशन कमेटी. नाम से ही आप देख रहे हो, दे आर टॉकिंग अबाउट इट. सेडिशन कमेटी हेडेड बाय सर सिडनी रॉलेट, which recommended that this law needs to be passed, Anarchical and Revolutionary Crimes Act 1919, and this was passed by the Imperial Legislative Council. Okay, and this is called as Rowlatt Act famously. So then it was later on opposed. When it was passed, it was opposed by Gandhiji on black law, and the All India Satyagraha main was actually started on 6th April 1919 and all, anti-Rowlatt Satyagraha movement in the entire India. Okay, yes. Now the next one is Jallianwala Bagh Massacre happened on which date? देखो एक पूरा CLAT का एक PYQ है. We will discuss that previous year question also in today's class. 20 I think 2024 में पूछा था ना. We will discuss that. ठीक है. So yes, 13th April 1990. Yes, B is the right answer to this question. Now what happened was there. देखो होता क्या है, यहाँ पर दिल्ली है ना. तो मैंने बोला कि ऑल इंडिया सत्याग्रह था. रॉलेट सत्याग्रह वाज ऑल इंडिया सत्याग्रह. सो ऑलमोस्ट वी हैड सीन इन एंटायर इंडिया. देखो मुंबई से स्टार्ट हुआ, दिल्ली, बॉम्बे, हर जगह देखा गया. सो मुंबई एंड डिफरेंट प्लेसेस वी हैड सीन द प्रोटेस्ट. सो पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में देयर इज अ प्लेस, द कैपिटल टुडे इट इज द कैपिटल इज अमृतसर, है ना, आल्सो. सो अमृतसर में देयर वर टू लीडर्स दैट वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस रॉलेट एक्ट and they were arrested. These two leaders are, what were their names? Satyapal and Saifuddin Kechriu. ठीक है. These two were arrested. Why? Because these two were the main leaders protesting against Rowlatt Act. Okay. हाँ सॉरी, कैपिटल इज चंडीगढ़, गलती से मैं बोल दिया. अमृतसर इज अ प्रोमिनेंट सिटी. हाँ यस कृषि. हाँ. सो बेसिकली these Satyapal and Saifuddin Kechriu were the two main leaders, Indian leaders, who were protesting against Rowlatt Act. So they were arrested. तब अरेस्ट, कोई फेमस लीडर अरेस्ट होता है तो क्या होता है, what happens? More people come, है ना. ऐसे होता है कि अरे मेरे लीडर को अरेस्ट कर लिया. So what happened was in Amritsar, what happened was there is a bagh, there is a what we call it as garden. एक तरह से मतलब गार्डन समझ लो, बड़ा सा गार्डन टाइप है, ये बाग है. तो उसमें उसके आसपास that day was बैसाखी डे, that you have to understand. हाँ देखो होता क्या है, एक चीज समझो. जैसे अभी तो आजकल का फेस्टिवल इज नॉट लाइक दैट एट दैट टाइम. तो पहले जमाने में क्या होता था, मतलब जैसे कि मान लीजिए मेला कहीं लग रहा है, दिस इज लेट्स से मेला वाज ऑर्गेनाइज्ड इन सिटी या अर्बन एरियाज. तो लोग जो है ना रूरल एरिया से, गांव से लोग आते थे फेस्टिवल के दिन स्पेसिफिकली, है ना, विलेज से इन रूरल एरियाज. सो स्पेशली ऑन द ओकेजन ऑफ एनी फेस्टिवल. सो देयर वाज बैसाखी फेस्टिवल, है ना.
होता ना कि लोग जब फेस्टिवल होता तो लोग चलते हैं, चलो शहर चलते हैं मेला देखने, समथिंग लाइक दैट। और इवन द पीपल ऑफ सिटी आल्सो गैदर। तो बैसाखी का दिन था, सो हुआ ये कि पीपल गॉट टू नो कि उस दिन भीड़ काफी थी। तो लोगों को जब मालूम हुआ कि दे वर सेलिब्रेटिंग, दे वर इन द मेलाज एंड ऑल, आसपास में शहर के, क्योंकि मालूम हुआ कि यहाँ लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं जलियांवाला बाग में। So people around it, the Indians who had gone for Mela etc., they got to know कि अच्छा Indians protest कर रहे हैं क्यों? Because 2 Indians were arrested by British. तो बाकी जो मेला में भी लोग आए थे वो लोग भी आ गए कि चलो हम लोग भी सपोर्ट करते हैं, लेट अस सपोर्ट द इंडियन ब्रदर्स, है ना, कि जो फेस्टिवल में आए थे लोग तो वो भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब जैसे ही ये बात पता चली, when the information was revealed to General Dyer, the military, he came and actually ordered the gate to be closed. उसका सिर्फ एक ही दरवाजा था, कहा जाता है, and he ordered the people to open the fire, and these all people were peaceful protesters. वो उनके पास वेपन तो नहीं ना था, वो तो नॉर्मल प्रोटेस्टर थे, मतलब नॉर्मल कॉमन मैन थे, and actually many people died. So a very great crime happened in this place, and that is why this is it declared martial law, opened fire etc. I hope you all are aware of this. तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। तो एक रीजन जो भीड़ जमा होने का ये भी था आसानी से, इसलिए कि बैसाखी था तो लोग आते हैं शहर में, मेला वगैरह देखते हैं, पीपल, है ना, पार्टिसिपेट इन दैट। सो दे आल्सो डिसाइडेड कि ओके लेट्स पार्टिसिपेट इन द प्रोटेस्ट आल्सो बिकॉज़ 2 Indians were arrested, ठीक है। दैट इज व्हाट वाज देयर। So General Dyer entered and ordered to open the fire. So this is the date, please remember it. And this is a very unfortunate incident in the history of India. So let us actually discuss this question. This is a 2024 paper of CLAT. So I am giving you 1 minute, 1.5 minute to read this. ठीक है, आप इसको पढ़ो, then I will give you question. ठीक है. So once you are done, please write done. ठीक है. I am giving you some time. पढ़ लिए? Done? Okay, so let us. One person has written done. What about others? Yes. Okay, fine. 3 people have written done. 4. So let us begin with the first question. Which incident is described in the passage? ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन है, अगर आपने एक बार ही पैसेज रीड किया होगा यू कैन आंसर इट। ठीक है, अभी तो चूंकि हम लोग इसी टॉपिक की बात कर रहे हैं, सो यू ऑल कैन इजीली आंसर इट, है ना। हाँ, तो इनफैक्ट पैसेज में मेंशन भी है ना, जलियांवाला बाग एंड जलियांवाला बाग, है ना। सो किलिंग्स ऑफ जलियांवाला बाग, सो एक दो ही से आप पकड़ लोगे। सो द आंसर इज ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग मैसेकर अप्रैल 1919। सो दिस वाज वेरी इजी। मैं अभी लिख दे रहा हूँ कि कौन सा इजी है, वेरी इजी है। दिस वाज वेरी इजी। So even if you have not read it beforehand, you can answer it with the help of passage. Okay. The next is, why did the General Dyer order to fire on the crowd?
Everyone should try. So basically the answer released by CLAT was option C, to teach the crowd a lesson, है ना? हाँ, which type of lesson? कौन से lesson की बात हो रही है? हाँ, मतलब एक्चुअली मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही, अगर आप पढ़ोगे, मतलब एक तरह से होता है जिसको हमने हिंदी में कहते हैं सबक सिखाने के लिए, वो सेंस में, दैट इज व्हाट इट इज मींस, है ना? टीच द क्राउड अ लेसन, कि व्हाई आर यू प्रोटेस्टिंग, आई विल टेक इट, है ना? तो हाँ, कि क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? देखो, अब आप बोलोगे टू इन्फोर्स द मार्शल लॉ, लेकिन मार्शल लॉ लगाया क्यों गया था? यही रीजन के लिए तो। हाँ, यू गॉट इट। उसका भी जो मेन मकसद ये था ना, स्कैटर करने के लिए थोड़ी करेंगे, ब्रिंग द क्राउड अंडर कंट्रोल, ये भी नहीं सेशन, है ना? हाँ हाँ, कि why are you protesting etc, why are you protesting arrest of those people etc and all। तो सब चीज जो है मेन यहाँ पर बात इसलिए आती है कि आप बोलोगे सर मार्शल लॉ भी तो लगा था उसको इन्फोर्स करने के लिए, लेकिन मार्शल लॉ लगाया क्यों गया था? That was also the reason lies here, so the most appropriate answer would be C, ठीक है? So think in that way, है ना? So that was the reason why martial law was also invoked. C is the right answer. Now the next one is, yes, very good, people have written. Should have listened to the order. Yes, Priyanshi, Krishi, Sachdeva, Hari, Adrija, got the right answer. In the light of above passage, what was the intention of the speaker? देखो, कुछ तो आप ऑप्शन ऐसे ही आप एलिमिनेट कर सकते हो। देखो, प्रीवियस जनरल डायर, आपको लगता है ये नहीं होगा तो अपने आप ये नहीं होगा, ठीक है? सो डी कैन नॉट बी द आंसर इफ ए इज नॉट द आंसर। चलो, कुछ हो सकता है लोग बी और सी में कंफ्यूज कर सकते हैं कि सिंपैथी फॉर इंडियंस हु डाइड, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो आप बोलोगे सर सिंपैथी ऑफ इंडियंस भी तो कहीं के भी नीचे में लिखा हुआ है, यस, के पीपल डाइड एटसेट्रा, अग्रीड, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, जो शुरू से लेके लास्ट तक जो बात हो रही है, द मेन आइडिया बिहाइंड, दे आर फोकसिंग ऑन जनरल डायर्स बिहेवियर, है ना? सारी जगह यही लिखा कि इंटर्ड ऑर्डर टू ओपन द फायर, ही वांटेड टू टीच द लेसन एटसेट्रा लाइक दैट, है ना? So that is what the idea is, to actually the main idea is to expose the deeds of the general dyer। और entire passage में जो फोकस किया जा रहा है बार बार जनरल डायर लिख करके, ठीक है? So that is why the B is the right answer to this question। तो ये आपको समझना होगा ना? Very good, people have answered, B is the right answer। The next is after the incident, who helped the injured and the dying people? This is mentioned in the passage, but the common sense also you can answer। हाँ, अब देखो, आफ्टर द इंसिडेंट, अरे जो चलाने वाले वही मदद करेंगे, आर्मी तो होगी नहीं, पुलिस भी, ब्रिटिश पुलिस, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट इज सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन? ये क्या होता है? ऑफ कोर्स व्हेन पीपल वर किल्ड, जो कुछ लोग सरवाइव किए तो सम जो फेलो इंडियंस होंगे वही ना आके मदद करेंगे, आसपास में लोग जो बचे बचेंगे, दे विल कम एंड हेल्प। देखो, ऑल दीस थ्री वर इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश, ठीक है? सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ना, जैसे डीएम, एसडीएम, कमिश्नर, ये सब यहाँ ब्यूरोक्रेट्स में, देखो जैसे यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ भी, देखो अगर आप पैसेज पढ़ोगे, सो हाँ, डेप्यूटी कमिश्नर, ये सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है? डेप्यूटी कमिश्नर वही डीएम, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसडीएम, ये सब हो गया। तो ही हैंडेड ओवर द सिविल पावर टू हिम, किसको? मिलिट्री को दे दिया। क्यों? हाँ, नहीं नहीं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हो, बट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्चुअली जो आईएएस काम करते हैं, आईएएस या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग जो होते हैं, दैट्स कॉल्ड सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, है ना? डीएम, एसडीएम, कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हाँ, कह सकते हो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी, बट जनरली दैट इज द केस। और पुलिस मत होगी, एसपी, डीआईजी, आईजी, जो ये सब पुलिस के लोग हो गए, और मिलिट्री, ठीक है? ओके, सो अब आप देखोगे तो अरे तीनों तो ब्रिटिश ही के थे, आर्मी इज आल्सो ब्रिटिश, पुलिस इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो कलेक्टर वगैरह होते थे, कलेक्टर, कमिश्नर, दे ऑल आर एक्चुअली फ्रॉम ब्रिटिश, तो वो थोड़ी मदद करेंगे, है ना? सो ऑफ कोर्स द कॉमन सेंस इज दैट इफ द इंडियंस ऑफ कोर्स वुड हैव हेल्प्ड। हालांकि ये लिखा हुआ भी, लेट मी शो इन द पैसेज। अब जो देखो यहाँ पे नीचे लिखा, those who lived nearby came and carried away some of the wounded from the heap of dead and dying, ठीक है ना? जो आसपास पड़ोस में लोग रहते थे, उन लोग आए और मदद किए, कुछ लोग बच गए होंगे, उनको आए हेल्प किए, जो भी कर सकते थे, ठीक है? Okay, that is what you should be knowing। Let's move on to the next one। What would be the feeling of the Indian children brought up to the spot? ये भी passage है mentioned actually।
What should be the answer? हाँ, मंथन करना, वीकली मंथन। यस हर्षिता, पढ़ो उसको आप। हाँ, बिटरनेस अबाउट द ब्रिटिश वुड बी इज द राइट आंसर। देखो फ्रेंडलीनेस तो खैर किसी भी हाल में नहीं होगी। सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस आप कह सकते हो कि जब लोग को ऊपर अटैक हो रहा हो तो हेल्पलेस हो गए, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ये जो बात हो रही है वो यही बात हो रही है ना कि ब्रिटिश बिटर थे, है ना, दैट वाज द मेन थिंग, है ना। तो इसमें लिखा हुआ भी देखो नीचे पैसेज में, समवेयर हियर इट इज रिटन। हाँ, can you find Indian children brought up to this spot just as they visit now Kanpur Hall? Well, and you can imagine the feeling as these generations for over these terrible business, है ना। यहाँ से आप समझ सकते हो कि they are talking about how terrifying the British rule was, है ना। So bitterness B is the right answer to this question. The next is what was the full name of the General Dyer? It was very difficult question. अगर आपको आता नहीं था तो of course you cannot do anything. ठीक है, इससे मैंने कुछ और क्वेश्चंस भी ऐड किए, मे बी दे कैन कम अगेन। सो फुल नेम ऑफ जनरल डायर बताओ। यस, वेरी गुड। नाउ अब तो जब क्वेश्चन एग्जाम में बाहर आ जाता है तब तो लोगों को पता होता है, एग्जाम हॉल में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू आंसर। यस, सी इज द राइट आंसर, है ना, रेगनल्ड एडवर्ड हैरी डायर। अच्छा, मैंने आपको कई बार ये कहा है, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट प्लीज रीड द विकिपीडिया पेज ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच आर इन द न्यूज़। ये बहुत सारे क्वेश्चन में लोगों ने किया है कि अच्छा जैसे जलियांवाला बाग मैसेकर आपको पढ़ना है तो देखो उसमें लिखा सैफुद्दीन, सत्यपाल, है ना, जनरल R.E.H. डायर। तो अगर R.E.H. डायर भी आपने पढ़ा होता तो यही वाला आंसर था, R.E.H. डायर, है ना, रेगनल एडवर्ड हैरी डायर। ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। सो सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताओ, इस पर एक्चुअली फ्यू इयर्स बैक वी हैड सीन अ फिल्म आल्सो, है ना, सरदार उधम सिंह। Name the Lieutenant Governor of Punjab at the time of Jallianwala Bagh Massacre who was killed by Sardar Udham Singh, I think in England, है ना। इन पर शायद कोई फिल्म भी आई थी। Yes, someone dog lover has written Michael O'Dwyer. Very good. Yes, you're right. Actually, his name was Michael O'Dwyer. अब लोग क्या कहते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं कि जनरल डायर एंड माइकल ओडवायर वर सेम पीपल। ठीक है, सो बट दिस इज नॉट द केस। ये ब्रिगेडियर मिलिट्री ऑफिसर था, ही वाज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर। डायर नाम में लास्ट में लिखा है, इट इज ट्रू, बट you have to understand that this was a different person and he was killed by Udham Singh. ठीक है, लोग कंफ्यूज कर रहे थे कि जनरल डायर को मारा था, नहीं, माइकल ओडवायर, है ना, and he was the lieutenant governor of Punjab during the Jallianwala Bagh Massacre. So he was also involved in that and that is why he was assassinated by Sardar Udham Singh. हाँ ठीक है, देखो विकिपीडिया का जो कृषि सर डिवाइस आस्किंग सर इज नॉट अवेलेबल सोर्स, देखो विकिपीडिया में देयर आर मिस्टेक्स आल्सो। ठीक है, फर्स्ट अंडरस्टैंड इट। सेकंड थिंग इज, बट मैंने जो देखा है, हैव सीन मेनी क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड फ्रॉम विकिपीडिया डायरेक्टली। बिकॉज़ होता क्या है, जो क्वेश्चन मेकर कोई भी चीज न्यूज़ में तो सर्च करते, सामने जो दिखता है विकिपीडिया वहां से क्वेश्चन उठाते। जैसे हमास पर क्वेश्चन आया था, हमास इज कॉल्ड एज इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट, उसा डायरेक्ट विकिपीडिया पे ही लिखा हुआ है टॉप में। I'll give you a lot of examples where they have directly asked from Wikipedia. तो कोई भी चीज न्यूज में रहे, I know it is not 100% trustworthy to read from Wikipedia, trust, है ना, but whatever is in the news, please read at least 3-4 passages of Wikipedia. There are very highly likelihood that there will be a question. मैंने देखा है पिछले 3-4 सालों में, है ना। Okay, the next one is, what was the name of the commission that was set up to probe Jallianwala Bagh Massacre? Do you have any idea when admit card will be released? No, I cannot predict. Just wait for that, है ना। Yes, Hunter Commission. Actually, Hunter Commission एक 1882 में एजुकेशन से रिलेटेड बनाया गया था, but this is not I'm asking. I'm talking about 1991, है ना। Is the right answer. तो क्या हुआ था इसमें? Did they give clean sheet? What happened in Hunter Commission? So actually क्या था, देखो, Hunter Commission was set up in 1990. ठीक है, तो उसमें डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमिटी वाज सेट अप इन दिस रिगार्ड, है ना, ये वाला जो है नीचे वाला। एंड व्हाट हैपेंड वाज कि अगर आप गौर से देखोगे कि द चेयरमैन वाज ब्रिटिश, कुछ इंडियंस थे, देखो यहाँ पे सेतलवाद साहब हैं,
then Pandit Jagan Narayan hai, then Sultan Ahmad Khan hai. Some of them were Indians. I think 3 were Indians, and they opposed it. They said, the Hunter Commission tried to give clean chit type thing to the British, okay, to the General Dyer. कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, it was fine, etc. and all. But these Indians, इसमें कुछ Indians थे, 2-3 Indians were there. They opposed it. ठीक है, तो उन्होंने उन लोगों ने अपना dissent लिखा भी था dissent के, they wrote the dissent also. But अगर वजह ये है कि वो minority में थे, ठीक है ना, 3 members, majority members were there actually were white people, and that is why final conclusion ये था कि Hunter Commission gave clean chit, ठीक है. But always remember there were some Indians who opposed it also, who were part of that, but कुछ हो नहीं पाया, मतलब not much happened, but yes, उनका dissent was registered there, ठीक है. That is what you should know. अब हुआ क्या था, 2013 में David Cameron, the British Prime Minister, came and he visited Amritsar and he said that it was a shameful event, but he did not ask for forgiveness. ऐसे देखो होता क्या है कि देखो, the crime was committed in 1919 by British and he came in 2013. तो of course liability तो individual होती है, जिन्होंने crime किया उनको माफी मांगना चाहिए, but yes, symbolically sometimes you can come and ask for forgiveness कि मेरे पूर्वज ने जो किया था वो गलत था, etc. But उन्होंने apologize नहीं किया था, just know it, है ना. These were the things, but he called it deeply shameful, ठीक है ना. Cameron did defense not saying sorry for Jallianwala Bagh, but he said that it was deeply shameful. तो अब समझ लो, है ना. खैर. Now, one more thing. This class is over, but yes, one more thing. I hope you all are aware. This was very much in the news that the Pakistan Army Chief has promoted himself to Field Marshal, 5-star rank officer, and before him there was a Pakistani officer, Ayub Khan, who became Field Marshal, etc. ठीक है. तो अब ये रैंक बहुत इंपॉर्टेंट होगी because this rank also is followed in India. मैंने आपको बताया था कि ये 5-star rank होते हैं, है ना. And these are the 4-star rank where the Army Chief is there, Army Navy Chief. इस क्लास में मैंने डिटेल बताया था. So now it becomes important. Military rankings even become more important. And I had discussed it. Who was the first field marshal? दो इंडिया के field marshal रह चुके हैं ना, सैम मनेकशॉ और के.एम. करियप्पा. Air Force में एक marshal रह चुके हैं, है ना, अर्जुन सिंह. Admiral of the fleet, no one has got a 5-star rank here. ठीक है. तो ये सब important हो जाता. Please go and watch this class. I have discussed in detail about the rankings. ठीक है. तो शुरू के ये सब थोड़ा बहुत rough idea होना चाहिए आपको because it was in the news, है ना. So that is what you should know. तो पूछ रहे सर कैमरून, अच्छा, डेविड कैमरून was British PM at that time. So he had visited India. तो जलियांवाला बाग में गए थे and he said it was deeply shameful, but उन्होंने माफी नहीं मांगी. He did not ask for apology. ठीक है. खैर. हाँ, तो ये न्यूज़ में थे. That is why we are discussing about it, है ना. Okay. So this is all about today's class. Thank you everyone. Please subscribe to the channel. जो The Hindu analysis वो 8 PM पर होगी. That will be taken by Govind sir. ठीक है. So thanks for watching. Have a nice day.